Good morning, dear students. I hope all you are doing very much fine. And today, for another session of Partnership Act, you come across with various queries, various doubts, which we are going to cover in the class, as well as if you have few questions and doubts regarding previous class, if you are spare with the time, I'll try to accommodate with that also. Now keep your enthusiasm level very high because we are going to learn a very important chapter, Relations of Partners of Partnership Act 1932. Be awake, be attentive, be a good listener. After the end of the session, you will be able to understand this particular concept of Partnership Act in a much better way. But for that, your attentiveness and your alertness, your skills in listening is required. Not to name all, I remember few names, Sharma Vivek, Meenu. So these are the names which I just remember. The rest of the students, to everybody, this is my request that please get yourself involved completely in the class so that it will make your exam preparation much more convenient and easy. So just raise a hand. A teacher always need an affirmation from student side so that we begin with this session. And I am going to share the screen as well. Is the screen visible, students? Just let me know through chat box. Is the screen visible? Am I audible? Am I visible? Is the screen visible? Please let me know, students. Sir, is the screen visible? Ajit sir? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Hello? Yes, ma'am. Sir, your screen is visible. Okay, students, without wasting further any second, let's begin with the class, Relations of Partners. Why this chapter is of utmost importance from exam point of view? Because relationship of partners describes the rights, duties, obligations of partners in a partnership form. What are the causes if the duties are not fulfilled? What are the rights to the agreed parties if there is any breach? How the property constituted? What are their rights in relation to those properties? All these things are concepts we are going to cover in this class. Students, you must be aware that we will begin our lecture with this slide always. This is the logo, this is the motto of our institute. One who is awake when everyone is sleeping. Now, there is no time to sleep. No doubt you need to take a good sleep, but you must be awake at the time of your class. Be attentive. Coverage of this chapter is going to have these topics such as we will going to understand the partner's interest and liability towards the third parties, to check the scope of implied authority, what does change in constitution of firm means, what happens if there is any change in the constitution of firm, say retirement, death, outgoing partner, incoming partner, and what are the rights and duties of the partners. First, I begin my slide with Partnership Property Section 14. Now, student, you should, or I would say you must be aware about this section, particularly in this chapter. Because it is quite easy to learn to remember or recall these sections of this particular chapter.
while answering the question, because what examiner objective is to ask, you must have to mention section. Now, first we are going to cover section 14, 15, and 16. What does partnership property means? Okay, just imagine this. This is a table. This phone is a table, and I, being a partner, brings it into the partnership form and make it a joint stock or a common stock and start begin my business, my partnership business, with the usage of this table. Will it constitute the property of partnership firm or not? Or it remains belongs to me? Anyone? Will it become the property of partnership firm or will it become the property of mine only? It remains the property of mine only. Anybody? Okay, now your response is quite low today. I guess it is gonna still not be आप लोग जागे नहीं हो. You're not taking the motto of your institute seriously. I have to explain it. The expression property of the firm also referred to as partnership property or partnership asset or joint stock firm or common stock or joint estate. देखिए कोई भी नाम हो सकता है बच्चे. In examination, any word usage of words could be there. It denotes all the property, rights and interest. Very important, like all the property, राइट्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि उससे जुड़े अधिकार, उससे जुड़े आपका कोई इंटरेस्ट, आपकी उसमें क्या रुचि है, टू विच द फॉर्म दैट इज ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली मे बी एंटाइटल्ड. The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following items. It means, what does property includes? These 3 points, and these 3 points is a common base where the property is considered to be the property of partnership firm unless otherwise agreed. अब बच्चे एक चीज बड़े ध्यान से सुनिए. In every law, when we use the sentence unless otherwise agreed or subject to the agreement, subject to the contract, what does it mean? It means that what generally law says, we are going to define that. We are going to define what generally law says, but it could be an exception or some other thing could be happen or could be followed if there is an agreement to that particular thing which the general law doesn't provide for. It means यदि आपने ये लाइन का इस्तेमाल किया है subject to the terms and condition or agreed between the partners, तो जैसा मेंशन किया गया है आपने अपनी नेगोशिएशंस में, अपने अग्रीमेंट में, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में वैसा होगा. अन्यथा अदरवाइज वो होगा जो जनरल लॉ कहता है. अभी ये जो लाइन है ये बड़ी इस्तेमाल होती है. इट इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट यूज्ड इन स्पेशली इन पार्टनरशिप एक्ट, unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed. You see number of times this statement unless otherwise agreed. It means the law provides for this particular thing if not there is anything subjected to the contract. यानी कि हम जो लॉ कहते हैं we will follow that, लेकिन इससे अलग कोई चीज हो सकती है अगर आपने उसका कोई एग्रीमेंट कर रखा है. बट अल्टीमेटली बच्चे एक चीज ध्यान रखें, अगर हमने अपनी तरफ से भी, हम कौन है, वी आर पार्टनर्स, वी आर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म्स, अगर हम उसके अलावा कोई चीज अग्रीड अपॉन कर रहे हैं दैट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ लॉ. ऐसा नहीं है कि लॉ कुछ कह रहा है, लॉ तो जो कहता है वो फॉलो करना ही है, लेकिन हम अपनी टर्म्स कंडीशंस भी लगा रहे हैं तो हम अपनी टर्म्स कंडीशन फॉलो करेंगे क्योंकि ऐसा लिखा गया है लॉ में अनलेस अदरवाइज अग्रीड. तो बेटा अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब ये तो है कि आप कुछ अग्री तो कर सकते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते. इसका मतलब कि अगर आप कुछ अदरवाइज अग्री कर भी रहे हो तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. स्कोप उसका जो है आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ लॉ नहीं जा सकता. ये बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ठीक है. नाउ we are going to understand these 3 points. First point is what institutional partnership property consisting of. All the properties, rights, interest
which partners may have brought into the common stock. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये फोन अगर एक टेबल है, the contribution to the common business. It means all the property rights and interest which partners have brought into common stock as their contribution to the common business. मेरा contribution क्या था? For example, मैं ये टेबल लेकर आया, तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, मैंने इसको क्या बना दिया है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बना दिया। अब इससे जुड़े ये प्रॉपर्टी, इससे जुड़े अधिकार, इससे जुड़े इंटरेस्ट किसमें वेस्ट करने लग जाएंगे? बताएं बच्चे। Any my this property table, my rights associated with this table, my interest associated with this table, now ceases to be my right, my interest, and my property. Now it becomes the property, it becomes the right, it becomes the interest of partnership firm only. Got the point? Second point. All the property rights and interests acquired or purchased by or for the firm for the purpose of course of business. It means अभी तो ये टेबल फर्स्ट पॉइंट में मैं लेकर आया था अपने घर से, मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अभी हम घर से नहीं लेकर आते हैं, अभी हम क्या किया? हमने एक्वायर करिए, हम परचेज करिए। क्यों करिए? पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को रन करने के लिए। इट सिंपली मीन्स दैट आई हैव बॉट परचेज दीज पेपर्स to conduct the business of the firm. So one is I brought it, I being a partner, brought the property and brought it into common stock as contribution. Another one is we as partner purchased the property. Third one is goodwill of the business. What does goodwill of the business mean in partnership? Anybody? We have so many participants here. अनुराग, चिन्मय, हर्षिता, हर्षनी, लबोनी साहा, मीनू दुबे. Students, where are you? See the time, it's already 10:15. You're still not awake. Tanish, Tanmay, Vidharth, I want answers and affirmations from you that you people are getting the points. Yes, Meenu. Can we, Labonisa reason, sir, can we unmute the students? No, not unmute, just enable them to chat. Ajit sir. So you don't have to speak anything, students. Just write it down. The chat is already enabled. Then I'm not getting their answer actually. You are not getting even a single response? No, not so far. Technical team? Please check whether the chats are enabled or not. Dear students, please write in confirmation. Please write something in chat box. Now it is the reputation of business. Yes, correct. So now you got some response? Yes, ma'am. Okay, sir. Okay. Actually, it got enabled just now. Okay, students, ये गुडविल आपको मालूम है। बच्चे इसको जरा एक एग्जांपल से पढ़ेंगे हम, ठीक है? एक मैंने एग्जांपल डाला, गुडविल की भी बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा जी, ठीक है? फिर हम इसको समझेंगे। Just read the example once. Anurag, Prerna and Rishabh are partners in a catering business running in the name of Vasu Caterers. ठीक है? अभी हमने इसका टॉपिक नहीं पढ़ा. What does the law says about it? We have not yet done it, but we just jump onto the example because it will give us the understanding what the law says. With the help of an example, it is very much easy to understand what law says. Now begin with the example. Anurag, Prerna and Rishabh are partners in a catering business running in the name of Vasu Caterers. In September 2024, Anurag resigns and the Prerna and Rishabh reconstituted the partnership firm without changing the business name. It means Anurag is an outgoing partner. Prerna and Rishabh are now the new reconstituted partnership firm without changing the business name. And the business name is Vasu Caterers.
Anurag also assigned all his rights. बच्चे इसको ध्यान से सुने. Anurag, who is an outgoing partner, assigns all his rights. मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी कुछ भी उसका जो शेयर है, अपने राइट्स को, अपने टाइटल को, इंटरेस्ट को गुडविल में catering business in the name of Vasu Caterers. His firm's office is near Prerna's and Rishabh firm, that is Vasu Caterers, and he even keeps the same logo as the original company. अभी देखिए बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह की चीज पढ़ी है जहां पर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात की जाती थी, जहां पर गुडविल की भी बात की जाती थी. देखिए सी हाउ कॉन्ट्रैक्ट, देयर फ्यू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज applicable here. Obviously, it must be applicable because Indian Contract Act is a general act which talks about any contract, be it a contract of partnership firm or any other contract. Partnership firm is itself a contract, so the general laws of contract act applies here also. Can Prerna and Rishabh sue Anurag? Now answer me this. I understand we people have not covered what the law says regarding goodwill. I understand we have not yet done the slides of this particular case study. But what generally you understand with the help of this example? Because you people have already covered your Indian Contract Act as well. So, can Rishabh and Prerna sue? Yes, Prerna and Rishabh can sue. For some time, partner cannot do same business. Why is it so? Because the law says you just cannot restrain anybody to pursue a business, to pursue a livelihood. Then why, if Prerna and Anurag is suing, Prerna and Rishabh are suing Anurag, it means they are putting restraint in the business of Anurag. And restraint of business is not acceptable in law. Then why you can think, you people are thinking that they both can sue Anurag? Yes, they can sue Anurag as he had assigned his rights and sharing goodwill of the reconstituted firm. Yes, बिल्कुल ठीक है. Exception in case of goodwill. Yes. Monu Kumar has correctly answered. Exception in case of goodwill. बिल्कुल ठीक है. Restraint of trade has 3 exceptions. शर्मा विवेक, in which goodwill के बारे में हमारे को एक restriction हमेशा रहती है जिसका ये पॉइंट हमने आज कवर किया. ठीक है. Laboni Saha has correctly answered. Yes, they can sue Anurag as he had, बच्चे ध्यान से सुने, assigned. अनुराग ने क्या किया? His rights and sharing goodwill reconstituted firm को साइन कर दिया. जाहिर सी बात है उसने ऐसे साइन नहीं किया होगा. He must have been given some monetary compensation for that. जब आपने अपना राइट्स कर दिया तो आप सेम गुडविल या वो रेपुटेशन कैरी नहीं कर सकते, वो रेपुटेशन जो वासु केटरर्स की. यू अंडरस्टैंड बेटा? अमेरिका वन मोर क्वेश्चन अभी आएगी बेटा, क्योंकि मैंने अब आपको ऐसे किया. आई जस्ट jumped onto the example so that with the help of the example you understand what the law says. Okay. So now move back to the slides. गुडविल ऑफ द बिजनेस. अभी देखिए आपको 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो आप अपना कॉमन स्टॉक ब्रॉड करते हैं एज कंट्रीब्यूशन. क्योंकि देखिए जब you start a partnership firm, you must have to bring something as contribution. So first point is regarding contribution. Second point is regarding property rights which you acquired during the conduct of business. And third point is goodwill, जो हमने एग्जांपल के तौर पे अभी अच्छे से समझ लिए. ठीक है. Now the question arises, if property of a partner is being used for the purpose of the firm, is it a partnership property? Always answer yes if it is intended to do so. It means if you want to treat your property be the property of partnership firm, then it is the property of partnership firm. Otherwise, if you have agreed that this remains the property of a partner, then it will not become the property of partnership firm. However, partner may convert the property of a partner or co-partners in the property of the partnership. यानी कि आप convert कर सकते हैं. एक example देख लेते हैं. If a partner contributes a building to the firm, for example, you have one building or a godown or a
showroom or whatever in the form of building, you just contributed to the firm. That building becomes firm's property. This is what we have read. It becomes the firm's property because of this first point. Contribute किया ना अपने कॉमन बिजनेस की, बिल्डिंग आपने कंट्रीब्यूट करी, तो किसकी प्रॉपर्टी बन गई? पार्टनरशिप फॉर्म की। ये बात हमने भी फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पढ़ी है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अब लास्ट में क्या कर दिया? अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यानी कि ये जो बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल अनुराग हैज कंट्रीब्यूटेड अ बिल्डिंग टू द फर्म, इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ बासु केटरर, नॉट अनुराग्स पर्सनल प्रॉपर्टी। एक लाइन अगली अलग लगा दी, अनलेस अदरवाइज। अब अनलेस अदरवाइज अग्रीड से ना सारी कहानी बदल जाती है। इट जस्ट took the story to altogether at a different scenario. What does it mean unless otherwise agreed? Please tell me, because you people have seen number of times this line, unless otherwise agreed, contract to the contrary, as per the terms between the partners. What does it mean? Quick answers. Yes, Monu Kumar. Unless they have agreed in the contract to do differently. It means what does general law say, that it becomes the property of partnership firm unless they have something in between them to be agreed upon. Here mutual agreement. Okay, general property and special property we are going to cover. ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है बार-बार, इसको हम कवर करेंगे। And if there is no other conditions or agreement, then general law will applicable. Then it becomes the property of partnership firm only. ठीक है। There is a question, general property and special property. ये Pawan Yadav is asking. We are going to cover this, but not now. Okay, fine. Now shall we move? Now Goodwill. अभी आप कहेंगे सर हमें तो Goodwill समझ में आ गया है कि क्या होता है, with the help of बासु केटरर एग्जाम्पल। सो एक बार हमें पढ़ना रहेगा। Section 14 it specifically lays down that goodwill of a business is subjected to the contract between the parties. Again ये line आ गई हमारे पास। To be regarded as property of the firm, it means it is very much apparent that goodwill is the property of the firm, because firms, what is goodwill? The reputation of a business, and this is what firm has acquired. This is what firm has either purchased, acquired, the reputation over the period of time. So it becomes the property of partnership firm only. But this section does not define the term goodwill. Goodwill एक ऐसा concept है which is easy to understand but difficult to define. ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन अभी आप आगे CA IPCC एंड फाइनल में जाएंगे क्या, जब तो गुडविल के आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, आप गुडविल की कैलकुलेशंस भी करेंगे, and then you get to know in CA final so vast number of questions in goodwill chapter where there are a number of methods to evaluate the goodwill, and there is no such any concrete method because it is a subjective thing. You might have a good reputation in your eyes for somebody, or you might have a low reputation for somebody in your eyes. So it is a subjective thing. So goodwill is a concept which is very easy to understand but difficult to define. Goodwill may be defined as the value of the reputation. Now it is very difficult to measure the value of a reputation, but we have formulas, we have methods to calculate it, to arrive at a value. But however, that's not the part of our syllabus. Moving back to the topic, goodwill may be defined as the value of reputation of a business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits. तो सभी कमा रहे हैं, आने वाले कुछ समय में in the coming years what the business is going to generate in terms of revenue over and above the normal profits. That is what your reputation is all about. Belonging to the same class of business. When a partnership firm is dissolved, every partner, अब देखिए जब partnership firm dissolve होती है, अब goodwill किसकी है? It is not of a particular partner. It is of a partnership
firm. When a partnership firm is dissolved, every partner has a right. Now there is a line, in the absence of any agreement to the contrary. अभी ये लाइन हमें तंग कर रही है बार बार, ठीक है, ये लाइन हमें बार बार तंग कर रही है, लेकिन अब आप कहेंगे सर ये लाइन बार बार हमें तंग नहीं कर रही. We get to know the meaning of this line. We understand what does this line means. Whenever this line comes in any law, we understand what does it say. What is the objective? What is the intention of this line putting in between? तो अभी आपको पता चल गया ये लाइन अब हमें तंग नहीं करेगी. Again, when a partnership firm is dissolved, every partner has a right in the absence of any agreement to the contrary. It means we are talking about the general law. To have the goodwill of the business, आपको goodwill का हिस्सा मिलेगा जो बेची गई है for the benefits of all the partners. It means firm is get dissolved, goodwill is being sold. Obviously, when it is sold, there is a monetary benefit. The benefit will be distributed among the partner. It means every partner is entitled to share the benefit of that goodwill, because goodwill is the property of partnership firm, not of a particular partner, unless otherwise agreed. Got my point? Shall we move on? What is the further provision of goodwill? Then we will go according to those provisions. इसी बात का तो मतलब ये हुआ ना कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने अपने जब आपने डील बनाई पार्टनरशिप फॉर्म की, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन यू पीपल पुट इन. So we are going to that terms and condition, but that must be within the scope of Partnership Act, Contract Act, and other laws applicable to it. Okay, you keep on asking one question. I have already answered it. Means then the given section will be followed. Pawan Dubey, you have typed one question more than 10 times. Don't do this, please. मैं आपको फिर से बता देता हूं. पवन, आपने पूछा है सर व्हाट आर द फर्दर प्रोविजंस ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म. गुडविल के जो भी प्रोविजंस रहेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे, but that must be within the limitations of the Partnership Act and the relevant laws, and otherwise general law will follow. And further provisions we are going to cover only which becomes the part of your curriculum. Pawan, is it clear? The Goodwill chapter is very vast. You understand? Number of things. Okay, got my point. Number of things are there to tell, but we just cannot cover it over here because we are going to cover only that thing which your curriculum about this particular unit, this particular topic, this particular chapter says about. Okay, got my point. Great. See, your cooperation is very much necessary for the smooth conduct of this class. Okay, now goodwill आपको clear हो गया ना? पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, आपका अधिकार गुडविल पे होता है. आपका इसलिए होता है अधिकार क्योंकि गुडविल पार्टनरशिप फॉर्म की होती है, आप किसी सिंगल पार्टनर की नहीं होती अनलेस अदरवाइज अग्रीड. अभी हमने एक एग्जांपल इसका पढ़ लिया था. Goodwill is a part of property of the firm. It can be sold separately or along with the other properties of the firm. Any person may, upon the sale of goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of firms within a specified period or within a specified local limit, as per section 27 of Indian Contract Act 1872. आप ये बात जानते हैं, what does Indian Contract Act 1872 say? That agreement in the state of trade is not valid. However, there are few exceptions. You may put restriction on an ongoing partner to carry on a similar kind of business, but the restrictions must be genuine. How would you say restriction is genuine? Court will not interfere if the restriction is. However, first we said the restrictions cannot be there. Restraint of trade is invalid, but there are few exceptions. One exception is goodwill and doing the similar kind of business.
it is valid. This restriction is valid. However, restriction must be genuine. There are 2 points which defines whether the restriction is genuine or not. Can you tell me the 2 points? बेटा लिखा भी हुआ है पॉइंट सामने. Restrictions regarding there must be agreement before entry into whether the similar business will not carry money. Restriction has to time and restriction has to place. Recall your previous modules, previous sessions as well. The restriction has to place and restriction has to time. If it is not genuine, court may interfere. Such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable if it are genuine. Now, property of a partner. When the property is exclusively belonging to a person, it does not become the property of partnership firm merely because it is used for the business of partnership. Such property will become the property of partnership if there is an agreement. It simply means if you have got something to get used by the partnership firm, but you have not brought it as a contribution and you have not put it in the common stock of the partnership, common stock of partnership firm, it still remains you still remains the owner of that property. It will not become the property of a partnership firm unless and otherwise there is an agreement. ये एग्जांपल हमने कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. Yes, Anurag has assigned. Yes means affirmation to Prerna and Rishabh that whether they can sue Anurag or not. So yes, Prerna and Rishabh can sue Anurag. बेटा for example याद है ना? Do I need to tell it again? हमने सबसे पहले एग्जांपल ही किया. I hope you people are okay. I mean yes. I don't think we need to, because CA students having this much of memory, I don't think so. It's going to work for you. It's going to. Okay, sir. I'm going. Ajit, sir. I'm going to the portal as well. Ajit, sir. It is only regarding the chat box disability. No other query as such regarding the content. Ajit sir, the queries are only regarding the disability of the chat box. Yes, sir, what happened? Okay, so yes, Anurag has assigned all his rights, including interest in the goodwill, to the newly reconstituted partnership forms, where Prerna and Rishabh are the partners. Hence, when he opens a business in the same name, that is Basu Caterers, he breaches the agreement. अभी प्रेरणा और ऋषभ क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रेन करना इनवैलिड है, नहीं किया जा सकता. बट देयर आर एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन का पार्ट बन रही है. Therefore, the court can order him, Anurag, to close down the business, or we can say that close down the similar nature business, or else change the name of the firm. See, Anurag has made a big default. He is doing the same business. The logo is same, the name is same. How it can happen? This is a pure injustice towards the remaining partners. Then the court will definitely going to interfere. Further, he may have agreed to not open a business similar to Basu Cater. जब आप agree कर गए हैं, तो आप उसको breach नहीं कर सकते. That too within certain location limits. In such case, court may also order him to shift the location of the firm. Got the point? There Niranjana and Sagarika. Let me check.
Niranjana and Sagarika, I don't have any of your query, neither at portal box nor here in the chat box. So you have not received any query from Sagarika and Niranjana, Arvind. Dear students, please write your queries to sir directly in the chat box. So you can go ahead. Yes, ma'am. Okay, moving further. Application of the property, section 15. See, obviously अब आप कहेंगे सर application of property किसके होगा? Obviously for partnership business में होगा. अभी पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं. Exclusively word का इस्तेमाल करते हैं. The property of firm shall be held and used exclusively for the purpose of firm, not personal. In partnership, there is a community of interest. देखिए आप सब लोग इकट्ठे क्यों आए हैं partnership firm में? Because we have a common interest, which all the partners take in the property of the firm. So it must be applied only for the purpose of business conduct. But that does not mean that during the subsistence of partnership, a particular partner has any proprietary interest in the asset of firm. अभी ऐसा भी नहीं होगा कि भाई बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो हमारा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है. Can anybody tell me that on one side law says the property exclusively belongs to firm, on another side is it logical that we as a partner say that okay this property belongs to partnership firm, so we have nothing got to do with it. We don't have any interest in the property of the firm because it doesn't belong to us as partners. It belongs only to partnership firm. Anybody? Niranjana, I've got your query. It says types of partnership. No. How can I tell about the content which I've already covered in the previous session? But are not possible in this class. Niranjana? You need to contact to BOS because the material and the PPT and the class is available on other platforms. Like the PPT is shared on the portal box as well. No, but logically, yes, form laws interpreted by the partners. Yes, form laws. See, how can we say that we don't have any interest in the partnership property because it belongs to the partnership only. We have interest in the partnership firm property because we don't want to bear the losses. Property is being used for the conduct of the business. Business wants profits only. If it is not used properly or if it is being misappropriated or misused, the business will not be able to generate the profits. It will generate losses, and no partner is willing to have the losses. So partnership property means property that is to be used for the conduct of business to generate revenue and profits for the partnership firm as well as for the partners. Now, the third line, but that does not mean that during the subsistence of partnership, a particular partner has any proprietary interest in the asset of the firm. Every partner of the firm has a right to get his share of profits. जो बात हमने पहले भी कर ली डिस्कस, हर एक को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट पाने का अधिकार है till the firm subsists, जब तक firm रहती है, and he has also a right to see that all the assets of the partnership are applied to and used for the purpose of partnership business only. See, it should not be misappropriated by anyone or all of the partners. This is what section 15 says. अभी बच्चे एक एग्जांपल देख लेते हैं. Imagine a partnership bakery, Basu Trades, owned by Anurag Prerna and Vishnu. They purchase an oven, mixer, and other baking equipments. What does section 15 say? That these assets, it means the oven, the mixer, and other baking equipments, belongs to the Basu Trades, not individually to Anurag Prerna and Vishnu. So, according to section 15, ये एसेट्स फर्म को बिलोंग कर रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टनर को.
और ये यूज भी किस लिए होनी चाहिए? फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ओनली. It belongs to the firm and must be used exclusively for making and selling goods, not for the personal use by Anurag, Prerna and Krishna. Now section 16. इसे करने के बाद एक क्विक को करेंगे, फिर हम दूसरे सेक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है? When you go through the study material, the series is not the same. It begins with the section 9, the general conduct of the business, then section 10, 11, and then 12. Then, but I started it with the property. And property, goodwill, and partnership property, section 14, goodwill, and this application of the property. Now, personal property earned by net. अभी बच्चे बड़ा आसान है समझना. First point is, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm, it means transactions belong to the firm. Profit derived by a partner himself, or from the use of property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for their profit and pay it to the firm. It simply means you are a partner. Now what you are doing? You are deriving profit for whom? For partnership firm or for yourself? For yourself. In the individual capacity. In the personal capacity. You are earning a profit. You are deriving a profit. How? आपने कोई फॉर्म की ट्रांजैक्शन करी है, उससे प्रॉपर्टी का यूज किया, उससे कोई बिजनेस कनेक्शन इस्तेमाल किया, उससे या फॉर्म का नाम इस्तेमाल किया, उससे. तो ये चार चीजें ध्यान से समझे. ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉर्म, use the property of the firm, using any business connection of the firm, or using the firm name. It could be more or similar the same thing. ये चार चीजें करके more or less करके आप अपना पर्सनल प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं. पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करना गलत नहीं है, लेकिन इन चार तरीकों से पर्सनल प्रॉफिट डिराइव करना अलाउड नहीं है. आपको उस प्रॉफिट को लेकर अकाउंटेबिलिटी रहेगी टू द फर्म और आपको वो पे बैक करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट इज. क्लियर हुआ? यस. इज इट क्लियर? मीनू तो इनको क्लियर हो गया. वेयर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? शर्मा, विवेक, निरंजना, नमोनी, मीनू. Sagarika and Niranjana, beta, you people are having queries of the previous class. This is simply not possible in this session because this session is going to cover another unit and another topic. The only thing that I can do is you have to go through the PPTs which is available to you on your portal box via BOSICAL. This is what I can do. Okay, Sharma Vivek is a doubt. Can you explain the second one again in Hindi? Vivek, I have not yet jumped to the second point. Maybe you are advancing because slide is in front of you. बेटा एक मिनट रुको. फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अभी सेकंड पॉइंट करते हैं हम. If a partner carries on any business of the same nature and as competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. ये वही चीजें जो भी हम पढ़ते हैं. What does it mean, sir? कि if your outgoing partner simply cannot pursue the similar business, he can pursue the similar business, but there are a number of restrictions on that. It must be genuine. It must be reasonable. Otherwise, court will interfere. You will have to be accountable to the firm. Any profits made out of that ingenuine transaction is to be paid back by that partner to the partnership firm. एक सेकंड रुको, आपको शायद एग्जांपल से बेटर समझ.
ये देखिए बच्चे, partner A, member of partnership firm that sells electronics, uses the firm supplier contact to start his own electronic business. Now what you people are doing, you in the capacity of a partner uses the firm connection, a firm supplier, to start his own electronic business and then start making the profit. अब section 16 का रोल यहाँ पर क्या रहता है? A partner A must account for and pay the profits for his new business to the firm, because that is something which is not allowed at all. Be it another situation, just to imagine a different scenario in example 1 only. Read it again. Partner A, a member of partnership firm, sell electronics, start his own electronic business in the similar vicinity, nearby vicinity, in the similar name. Will that be allowed? No, that will even that will not be allowed. Restriction रह सकता है, restraint of trade हो सकती है, but वो तभी होगा अगर existing partner वो करते हैं, अगर उनको कोई objection नहीं, you may carry on the business with a similar logo or the similar nature or the similar vicinity. Second point of example is partner B of a firm that operates a bakery uses the firm name and reputation to open the competing bakery and making a profit. अभी आप नहीं कर सकते. Partner B is obligatory to account for and pay those profits to the original firm. Example number 3. Partner C of a firm that buys and sells real estate uses the firm's property to invest in real estate project and makes a profit. अभी सबने कॉमन चीज क्या आप मुझे बता सकते हैं? Everybody is doing another business. The existing partner is doing another business. Whether it is a bakery business, it is an electronic business, or it is a real estate business. Common क्या है जिसकी वजह से सेक्शन 16 का रोल आ रहा है? What is the common thing where section 16 comes into play? वो फर्म का नाम या उसका रेपुटेशन यूज हो रही है. The partner, the existing partner is using the name, the connection, the reputation, the logo that belongs to the partnership firm and not to him. Then we use the yes, mono is correct. So let's make a quick go. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को कई नामों से बोला जाता है. एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज, राइट्स एंड इंटरेस्ट जो फर्म से बिलोंग करते हैं और उसी के बिजनेस कंडक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फर्दर 3 पॉइंट्स होते हैं. वो प्रॉपर्टी जो मैं कॉमन स्टॉक एज लेकर आया हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बिजनेस में, इससे जुड़े प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के होंगे. वो प्रॉपर्टी जो मैंने एक्वायर करी है या परचेज करी है, फॉर एग्जाम्पल ये पेपर्स थे हमारे एग्जाम्पल में, जो अगेन बिजनेस के लिए यूज होंगे. और थर्ड वन थी हमारे पास गुडविल, जिसका हमने इलस्ट्रेशन भी कर लिया. हमने फिर कुछ सवाल भी करे कि क्या पार्टनर की प्रॉपर्टी बिजनेस फॉर्म के लिए यूज होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म होती है? यस होती है, अगर हमारी इंटेंशन उसको ऐसे इस्तेमाल करने के लिए, और हम उसे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने का मतलब ही हमारी इंटेंशन है. अगर इस पेपर को मैं घर से लेकर आया हूँ, इसे कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इट मींस मेरी इंटेंशन है इसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनाने के लिए. देन इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. गुडविल की बात हमने कर ली थी. गुडविल के लिए हमने एग्जांपल देख लिया था. हमने एक एप्लीकेशन की बात करी थी. एप्लीकेशन बिजनेस के लिए ही होना चाहिए, ठीक है. हमने वो भी देख लिया था कि अगर कोई बेकर है तो बेकर के लिए जितनी भी एसेट्स है वो उसी पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस. फिर जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी अर्न बाय मेंबर होती है उसे पे बैक करना पड़ता है यदि वो कोई भी ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट कमाता है, जो कि फर्म की ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, फर्म की प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, उसके बिजनेस कनेक्शन के थ्रू होता है, उसका लोगो यूज करना है, उसका नाम यूज करने की वजह से होता है. आप अकाउंटेबल भी हैं और आपको उसको पे बैक भी पार्टनरशिप फर्म को करना पड़ेगा. अभी बात करते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद वन अनदर. आपका जो ICAI का स्टडी मटेरियल है, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर. If you have an intention to go through those study material or those notes,
So you will first see this topic in the study material, relation of partners with one another. So okay, that doesn't matter. At the end of the day, we have to cover each and everything from your curriculum. अभी बच्चे सेक्शन याद रखना पड़ेगा. सेक्शन 9, 10, 11, 12, देन फर्दर 12 के बहुत सारे सेक्शन है हमारे पास, 13 है, देन उसके सेक्शन है. धीरे धीरे अभी इस क्लास में जितना करवाया जाएगा उसी को रिवाइज कर लेंगे लास्ट में. एक ही दिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है. अभी हमने 14 और 15 और 16 सेक्शन पढ़ लिए. अभी हम सेक्शन 9 पढ़ाएंगे. सेक्शन 9 बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा. इट जनरली सेज अबाउट द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. अभी क्या करते हैं, पहले वी जस्ट जंप ऑन टू द एग्जांपल. इसको करते हैं फिर समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं सेक्शन में. ओके, रीड द एग्जांपल. Anurag and Prerna are in partnership of supplying groceries at home. Delivery of groceries at home. If Anurag has some knowledge regarding accounts for which Prerna is not aware about, he must disclose it to her. What does it mean? What do you understand with this, with the help of this example? अनुराग एंड प्रेरणा एक पार्टनरशिप फॉर्मिंग ग्रोसरीज एट होम. उनका कुछ डिलीवरी का सिस्टम बिजनेस है. अनुराग को अकाउंट्स की नॉलेज है, प्रेरणा को नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगला एग्जांपल भी सेम है, ठीक है. तो पार्टनर अनुराग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को होल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं. तो जब आप कोई काम कर रहे हो, आपके पास कोई जानकारी है, बीइंग द पार्टनर, बीइंग इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, तो आपको वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन अदर पार्टनर्स को बतानी ही पड़ेगी. इसे क्या कहेंगे बच्चे? इसे जनरल कंडक्ट करेंगे. दिस इज व्हाट सेक्शन 9 सेज अबाउट. You can change methods for calculating. But Tanish, what the methods of calculating you are talking about? Do you get this point? What does it say? It says about the general duties, general conduct of partners. Now, read section 9. The partner should carry business of the firm to the greatest common advantage. Common advantage means not of individual advantage, common advantage for all the partners. And later they should render to any partner or his legal representative. यानी कि आपको कहीं या पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारी जानकारी देनी पड़ेगी, उसको फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म. जो भी कोई भी ऐसी जानकारी जो पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के किसी भी निर्णय को प्रभावित कर सकती है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो बतानी पड़ेगी. किसको बतानी पड़ेगी? पार्टनर को. और वो किसे बताएगा? रेस्ट ऑफ द पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव. क्या बताएगा? हर वो जानकारी जो फॉर्म से जुड़ी है और जो रेलेवेंट है. You got the point? It is general duty of every partner. All the partners are bound. Now, here what's the bound? It means you are under a compulsion to render accounts to each other. But where some of the accounts are kept by any one of them, prima facie he would be proper person to explain and give full information about it. यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर जानकारी की आप इंचार्ज है और आपके पास ही है, तो आपको एक्सप्लेनेशन उसकी आपको करनी पड़ेगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. ये आपका सामान्य कर्तव्य है बीइंग अ पार्टनर. इट इज योर जनरल ड्यूटी. तो गॉट द पॉइंट. एग्जांपल पढ़ के हमने इसको समझ ही लिया. ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. ठीक है, क्या हो सकता है? इसका कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है? हमें तो वैसे समझ में आ रहा है देख के कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं. इंडेमनिफाई का मतलब आप समझते हैं, कॉम्पनसेट करना लॉस के लिए. कॉन्ट्रैक्ट में पूरा एक चैप्टर है इंडेमनिफाई, इस पे इंडेमनिटी पे. It is the firm decision. Yes. Nobody.
Okay, let's take the example. If partner A, in the course of firm's business, intentionally misrepresents the value of an asset to the firm. आप क्या कर रहे हैं? देखिए इंटेंशनली वर्ड है. अभी वर्ड ऐसा क्यों यूज किया जाता है? Because if it would be unintentional, then the scenario would be different. If it would be unintentional, the scenario would be different. You may plead to the court that it was unintentional, it was out of my knowledge. Further, these are the vast things कि हम उसमें पढ़ेंगे, एडजुडिकेशंस में आएंगे, पढ़ेंगे, मुकदमे में लिटिगेशन होगी, वो बात की बात है. जनरल लॉ सेज इफ इट इज इंटेंशनल, the misrepresentation is intentional, the value of an asset of the firm, and it will lead to the financial loss. अभी ये बड़ा जरूरी, lead to financial loss. Might be the chance that you are intentionally misrepresenting something, but that will not result into any loss to the firm. In that case, firm may sue the particular partner who has done fraud, but the court may relax him in terms of penalty because actually loss would not be there. But one thing, you have intentionally done something which is wrong, means misrepresenting the value of an asset. What is the repercussion leading to the financial loss? अभी आप गलत काम भी कर रहे हो और पार्टनरशिप फर्म को फाइनेंशियल लॉस भी होगी. ऐसी सूरत में पार्टनर ए, द डिफॉल्टिंग पार्टनर, वुड बी लायबल. अब लायबिलिटी तो बनेगी ना, टू इंडेमनीफाई, कॉम्पनसेट करना पड़ता है किसको? फर्म दैट द लॉस अंडर सेक्शन 10. दिस इज व्हाट द सेक्शन 10 सेज. अब इसको देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 10. द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस. आपको लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा, व्हिच इज सस्टेन्ड बाय द फर्म बाय हिज मिसकंडक्ट. The amounts so brought into the partnership should be divided between the partners. वो लॉस हुआ है तो वो पार्टनर्स को जो बेयर करना पड़ रहा है, उसी में तो फिर जब आप शेयर लेकर होगे तो उसी को पार्टनर्स के जो जितने होंगे उनको वो बढ़ जाएगा. An act of a partner imputable to the firm or the principles of agency, which is the fraud on his co-partners, entitles the co-partners as between themselves to throw the whole of consequences upon him. यानी कि इसके अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने कुछ किया है एक्टिंग फॉर वन, ठीक है ना. तभी अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं तो आप दूसरों के प्रिंसिपल होंगे, जो पार्टनर है जो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. अब इसका होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस किस पर आ जाएगा? अ पार्टनर हु हैज कॉज्ड लॉस to the firm by fraud. Section 10, I hope is clear to you. Moving on to section 11. Determination of rights and duties of partner by contract between the partners. अभी हमने जब when we started this session, in this slide of coverage of this unit, there is a very important topic I told you, rights and duties of partner. See, these are very important to give the remedy to the partner, to held responsible. So here comes the role of rights and duties. Remedies आपको rights देता है, ठीक है, और जो ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशन है, वो यहाँ से क्लियर होती है. तो ये जानना बड़ा जरूरी है जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं तो आपको क्या राइट्स और ड्यूटीज रहती है. सेक्शन 11 सेज अबाउट इट. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. व्हाट डज इट मीन? इन सिंपली मींस कि आपके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, ये राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा पार्टनर्स के बीच का. What are going to be my rights as a partner? What are going to be my duties as a partner? And other partners' rights and duties is determined by the contract between the partners. यानी कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म को जो है वो डिसाइड करेगी. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है.
सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आप उस कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चेंज तब तक नहीं होगा जब तक पार्टनर्स की कंसेंट नहीं हो जाएगी। एंड सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस और में भी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। यानी कि पहले तो आपके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहने वाली है, ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। ये कैसे होगा, ये एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होगा। जगह कॉन्ट्रैक्ट में कुछ यदि चेंजेस करनी है तो वो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के साथ होगी, और वो कंसेंट जो लिया गया है चेंज करने के लिए वो भी एक्सप्रेसली इम्प्लाइड हो सकता है। Second point is agreement in restraint of trade, not withstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act. Such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that firm for which he is a partner. अभी ये बात एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है दोबारा कि 27 क्या कहता है और उसके अलावा हमारा जनरल लॉ क्या कहता है और एक्सेप्शन क्या कहता है। जनरल लॉ कहता है कि पार्टनर नहीं कैरी कर सकता, हम रिस्ट्रेन करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन ये कह सकते हैं कि कब रिस्ट्रेन वैलिड होता है, कब रोक लगाना सही होता है। ये हम कर चुके हैं, इसको बार बार नहीं कर सकते हम, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। पार्टनरशिप एक रिलेशन है एमिनेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टेंस, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे कि जिस टर्म्स और कंडीशंस पे हम अग्री कर रहे हैं, but for the terms of agreement in all the things which is consistent with the essential nature and purpose of the business. Agreement to become partners in the first instance and to vary the terms at any time need not to be manifested in any particular form. यानी कि सिंपल सा मतलब है कि हम जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करें वैसे चलेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज डिसाइड कर रही है। यदि इसमें कोई बदलाव आता है तो वो बदलाव भी सभी की कंसेंट से होना चाहिए। क्लियर? अब इस एग्जांपल को एक बार पढ़ें आप लोग। कि आपकी क्या रोल्स ड्यूटीज बनेगी, एक बार इसको देखिए। किसी को डाउट है इस एग्जांपल में तो मुझे बताएं। If I asked about the individual responsibility of Anurag, Prerna and Rishabh, will you able to tell? If I asked about the responsibility, particular responsibility that belongs to Rishabh or to Prerna or to Anurag, would you be able to tell me? And how? If you're able to tell me, then how? How do you get to know that this is the responsibility of this particular partner? Anurag has to render purchase info to, ठीक है, पूर्वी इफ देयर इज अ फ्रॉड तो उसका लायबल कौन होगा? लायबल तो वही होगा पूर्वी, द पार्टनर हु हैज कमिटेड द फ्रॉड। फॉर एग्जांपल, इन आवर एग्जांपल, पर्टिकुलर पार्टनर हैज शोन द वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हिच इज इनएप्रोप्रिएट, दैट विल कॉज द लॉस टू द फर्म। अभी वो फर्म को लॉस जो हुआ है पूर्वी, वो किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एन एसेट। वो किसकी वजह से हुआ? किसी पार्टनर की वजह से, तो पार्टनर लायबल होगा towards the firm because firm has incurred loss because of that fraud. बेटा आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? Okay, Minu Dubey is saying mutual right and duties of partners of firm agreed by the contracted mutual person. Yes, correct.
बाउंड टू रेंडर द अबव इंफॉर्मेशन टू अनुराग। शर्मा विवेक ने कहा कि प्रेरणा और ऋषभ बाउंड है अपने काम की जानकारी अनुराग को देना, एट द सेम टाइम अनुराग बाउंड है अपने काम की जानकारी सारी उसको देना। ये सिमिलर आपने कहाँ पढ़ा है ऐसे कंटेक्स्ट, बताओ, बिल्कुल सिमिलर कंटेक्स्ट आपने कहाँ पढ़ा है कि जिसके पास जो काम है उसको वो जानकारी दूसरे को देनी है, ये कहाँ पढ़ा है? अभी एक सेक्शन पढ़ा आपने। यस, शर्मा विवेक जनरल ड्यूटीज आपकी। आप यहीं से ये एग्जाम्पल तो यहाँ भी लग रहा है, हाँ तो लग रहा है ना, जनरल कंडक्ट तो है ही आपका बिजनेस का, और जनरल कंडक्ट में तो जनरल ड्यूटी आती है। कंडक्ट का मतलब कि आप काम कर रहे हैं तो कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है। सो ड्यूटी एंड कंडक्ट गोज साइमल्टेनियसली। जनरल ड्यूटी मीन यस तनिष सेक्शन 9 बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 9। लेकिन तनिष ने सेक्शन बता दिया, इट मीन्स सेक्शन 9 की बात हो रही है तो जनरल ड्यूटीज और जनरल कंडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो। Imagine three friends Anurag, Prerna and Rishabh decide to start a business selling handmade crafts and form a partnership without written agreement. Over time, they establish a routine where Anurag handles purchasing material. Okay, one partner is assigned with purchase of material. Another partner, Prerna, manages the account. Third partner, Rishabh, takes the care of sale. The routine becomes an implied contract. कि अब ये तो implied है ना कि अनुराग हमेशा मटेरियल ही परचेज करेगा, प्रेरणा विल गो फॉर द अकाउंट्स एंड ऋषभ विल टेक केयर ऑफ द सेल। This is what implied contract with general duties and their general conduct of the business talks about. It defines their roles and it defines their responsibilities. Moving on to the next section, section 10 says the conduct of the business. Every partner has the right to take part in the conduct of business. सभी को पार्टनर को बिजनेस की कंडक्ट में बराबर का हिस्सा लेने का अधिकार है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस which I will be covering in the coming time of this class. Every partner is bound to attend diligently, rationally, बहुत विवेकपूर्ण निर्णय उसको लेना है अपनी ड्यूटीज को लेकर in the conduct of business. Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by the majority, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. But no change may be made in the nature of business without the consent of all partners. बड़ा important point है, इसको भी समझेंगे। जनरल लॉ ये कहते हैं कि आपने कुछ भी डिसाइड करना है तो मेजोरिटी डिसाइड करिए, सभी को अपनी ओपिनियन देने का अधिकार होगा। अभी देखिए मेजॉरिटी में और यूनैनिमिटी में एक फर्क होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड यूनैनिमिटी? एनीबॉडी? क्योंकि ये बड़ा इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनैनिमिटी एंड मेजॉरिटी? एनीबॉडी? शर्मा विवेक? लगोनी मेजॉरिटी है यूनैनिमिटी। यूनैनिमस सुना आपने? वोटिंग अमंग पार्टनर्स। What is a unanimous decision and decision taken with the majority? Okay, don't go on the word. So majority is one of the business. हरीश शर्मा विवेक नहीं, majority not in that context, minor major वो वाला नहीं है, who has attained the age of major. Majority means by most of the partners. For example, there are 10 partners, 6 will become the majority. And unanimous decisions means taken by all of them, 10 out of 10. You understand? अभी इसको समझते हैं बेटा, you people are not getting the point. देखते हैं
Just leave it. I'll tell you with the help of an example. Okay, moving on to the next point. Every partner has a right to have access to and inspect and copy any of the books of the firm. ठीक है? Event of death of a partner, अभी पार्टनर चला गया, उसका हियर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी एजेंट को अधिकार है कि वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और कॉपी ले सकता है। यानी कि पार्टनर का अधिकार तो है ही है, किस चीज का? बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना, उसकी कॉपी लेना, उसको इंस्पेक्ट करना। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी होती है तो उसका हियर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका ऑथराइज्ड एजेंट उसको देख सकते हैं। ये बोला कि जनरल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ये कहता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी, बट मेजॉरिटी हैज अ डिफरेंट मीनिंग अदर देन यूनानिमस। अगर कोई नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज होता है, नेचर ऑफ बिजनेस का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप कुछ? जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, फिर शायद आपको समझ आए व्हाट डज चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस मींस। Purpose of business when the parent for which it is established. Okay, just give me an example. Just give me an example where you change the nature of the business. Means exchange the service में आ रहे हैं, yes, it could be changing the body, yes. आप फूड प्रोडक्ट से ओवन में आ रहे हैं, ठीक है, और या टेक्सटाइल से आप कोई दूसरी लाइन में आ रहे हैं, स्टेशनरी में आ रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस चेंज फॉर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल आप कोई हेल्थ केयर देने के लिए आपकी पार्टनरशिप में हेल्थ केयर के लिए एंड यू स्टार्ट एजुकेशन एज वेल, देन इट इज ऑब्वियसली अ चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। अभी मान लेते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 50 लोग हैं, ठीक है। अभी हमें इसको हेल्थ केयर से हम क्या चाहते हैं, हेल्थ केयर से इसको एजुकेशन में करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, ये कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के बगैर चेंज नहीं हो सकता। अब आप नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी कर दिया, मेजॉरिटी का मतलब 26 लोगों ने से हाँ कर दिया, 50 में से, तो ये नहीं हो सकता। अभी आपको समझ में आया, ठीक है। अभी कुछ हम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। Every partner has the right to take part in the business of the firm. So this is what you have been told to us कि हर पार्टनर को बिजनेस में कंडक्ट में काम करने उसको पार्ट करने का अधिकार है। This is because partnership business is a business of partners and their management powers are generally co-extensive, not individually but co-extensive. अभी सवाल क्या आता है बेटा, देखो, what if partner restrain the other partner to take part in the business of the firm? Can court interfere in this regard? अब ये मुझे आप लोगों को आंसर करना होगा। हमने तो यही पढ़ा है that every partner has the right to take part in the business. Now there is a situation when any one partner or more than one partner or is being restricted to take part in the business of the firm. First of all, tell me, is it legal or not? It is valid or not? Acceptable or not? Is there any role of court to interfere? Being the partner, you have the right to take part in the business of the firm. Now, to any partner, the firm is making restriction to take part in the business. Is that restriction valid or not? Not valid to restrict any partner from taking part of the business firm, no. Because this is something with general law says, this is what I've been telling you, no, okay. So the answer is common no. No unless otherwise agreed by the party. Divyani Tiwari again has given the correct answer. हमारे पास में हथियार होता है देखो कानून में, unless otherwise agreed. बस इसके ऊपर हम सब कुछ चेंज करने लग जाते हैं। हम कौन है? पार्टनर। या लॉ में जिसकी भी बात करें, अनलेस अदरवाइज अग्रीड एक लाइन लगा देते हैं और उसके बाद हम मनमानी करने लग जाते हैं। वो मनमानी लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के दायरे में होनी चाहिए। शर्मा विवेक नॉट वैलिड। आई अग्री नॉट वैलिड, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। मैं आपको बताता हूं कैसे। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट,
if there is an agreement that a particular partner will restrict to this part of the decision only, or his share of taking decision is restricted, and he agreed upon that and admitted himself in the partnership form, then this particular clause does not work there. You understand? आपने अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया कि आपका रोल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. The partner has given the consent. Okay, my role is restricted to this particular thing, and I will not be entitled to make any decision or to take part in the business. ऐसा होता है जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनर करते हैं ना, तो उसका रोल रिस्ट्रिक्टेड होता है. ऐसी रिस्ट्रिक्शन वैलिड होती है इफ इट इज देयर इन द एग्रीमेंट. अदरवाइज जनरल लॉ यही कहता है, जो शर्मा, विवेक और बाकी आप सब लोगों के आंसर थे, कि ऐसा नहीं किया जा सकता. कोर्ट तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा. You got the point? अग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडी क्या रह जाती है? सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन. वो डिसोल्यूशन के लिए नहीं कह सकता, वो सूट फॉर अकाउंट यानी कि अकाउंट्स मांग सकता है, क्योंकि जब उसके साथ जाती होगी, उसको टेक पार्ट, उसको डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए दिया जाएगा, तो ये बड़ा ऑब्वियस है, ये लाजमी बात है दैट ही इज गोइंग टू लीव दी फॉर्म. अभी जब जाएगा तो अपना अधिकार लेकर जाएगा, और अधिकार के लिए उसको अपना शेयर चेक करना होगा, और शेयर चेक करने के लिए उसको अपने अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, इसलिए वो अकाउंट के लिए स्यू कर सकता है. ये अग्रीड पार्टी को रेमेडी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसको दे दी. ठीक है. दूसरा क्या है? सूट फॉर डिसोल्यूशन मांग सकता है. लेकिन ये तभी हो सकता. अच्छा, कि दोनों अग्रीड पार्टी को रेमेडी कब मिल सकती है? ये जनरली उसको मिलेगी मिलेगी. मुझे ये बताओ, ये उसको कब नहीं मिलेगी, या उसके ये अधिकार कब नहीं होंगे? अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि कब नहीं होंगे. बताओ. Tanish, I'm making it explain to you again. आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, आपको पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में पार्ट करने का पूरा अधिकार है. ये अधिकार आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दिया है. यदि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आप कोर्ट पे प्ली कर सकते हो, कोर्ट इंटरफेयर करेगा. यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ स्लाइड में, कैन कोर्ट इंटरफेयर इन दिस रिगार्ड, यस और नो कुछ भी नहीं है. आपको सुन के बस याद रखना है कि उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है, कोर्ट इंटरफेयर करेगा. लेकिन अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में खुद ही अग्री कर रहे हैं कि आपका रोल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और वो पार्टनर उसको एक्सेप्ट करते हुए पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, ऐसा व्यक्ति अग्रीड पार्टी नहीं कहला सकता. एंड व्हेन द पर्सन इज नॉट एन अग्रीड पार्टी, तो रेमेडी भी नहीं मिल सकती. यू अंडरस्टैंड? Tanish, is it clear to you? Okay, fine. Welcome. However, the above law is applicable only if there is no contract to the contrary. Then court interference is not there. देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है. कोर्ट मान लीजिए आता है, पार्टनरशिप हम कहते हैं, तो हमारे में पहले से अग्रीड है कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोल रहेगा इसका. फिर कोर्ट कहेगा जब आपने अग्री कर रखा उस चीज पे, तो मेरा हस्तक्षेप का कोई भी लॉजिक नहीं है, इंटरफेरेंस का कोई भी लॉजिक नहीं. राइट टू बी कंसल्टेड. हमने सीधे मैंने क्वेश्चन डाला है, इसको बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले ये देखो. What if the change in the nature of form itself? Unanimous consent is required. And what if it is not the case of change in the nature of form? तब क्या होगा मुझे ये बताओ. मैंने स्लाइड को थोड़ा सा आगे कर दिए, so we're not able to read what the law says exactly, but अभी हम इतना पढ़ चुके हैं कि आपको आंसर आना चाहिए. इस स्लाइड में जो कह रहे हैं उसका वाइस बात कर रहे हैं हम. If there is a change in the nature of form, then unanimous consent is required. What if it is something which is not in the nature of change of business? Then how the decision is to be taken? How to consult? How to move further?
Laboni is saying by majority rule. No such consent will be required. Divyani, what consent? Majority or a unanimous? Mutual consent. Majority express their view, correct? By majority rule. Divyani and Sharma Vivek. यानी कि आपको मालूम चल गया, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं क्या कहती है इसमें। Where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by three of the majority of them, and every partner shall have the right to express his opinion. यानी कि मेजॉरिटी से होगा और हर व्यक्ति को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है। Sir, at one point of time you are saying majority, at another point of time you are saying right to express opinion of every partner. So opinion could be different. No doubt opinion could be different. For example, we're going to take a decision where 6 are in yes, 4 are in no. So 10 of them are giving their expressing their opinion either in the form of affirmation or in the form of a simple no. So express the right to express the opinion is available with everybody. However, decision is as per the majority rule. You got the point? However, no change in the nature of the business of the firm can be made without the consent of all the partners. Nature of business का मैंने आपको बता दिया था, एजुकेशन हेल्थ केयर में चेंज हो रहे हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन हो रहा है, ठीक है। और यू आर इन फार्मास्यूटिकल्स ओनली, आप मेडिसिन दे रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल, तो वो चेंज हो रहा है। आप एजुकेशन में भी होता है, आप हायर एजुकेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल तक की एजुकेशन की बात है आपकी, देन यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग दी हायर एजुकेशन एज वेल, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हायर हो रहा है, कॉलेज लेवल हो रहा है, तो नेचर ऑफ वो भी चेंज हो रहा है, तो आपको वो कंसेप्ट करनी पड़ेगी सर। This means that in routine matters, the opinion of majority of the partners will prevail. इनकी रूटीन मैटर में आपने मेजोरिटी मान ली, लेकिन जो रूटीन मैटर नहीं है, जैसे कि नेचर चेंज हो रहा, तो आपको कंसेंट सभी का चाहिए होगा। Of course, the majority must act in good faith. यहाँ पर ये भी आ जाता है, ये भी बड़ा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेजोरिटी गुड फेथ नहीं होनी चाहिए। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती कि मेजोरिटी गुड फेथ में एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। 6 लोग मिल गए एक साथ, वो गलत चीज को हाँ कर रहे, इट माइट बी द चांस कि आपका वो डिसीजन ओके हो जाए। I think sir has disconnected. Please announce a break for 2 minutes, 2 or 3 minutes. Okay.
Okay, students, let me share the screen. Is it clear what section 12 says? 12C, right to be consulted. Now section 20, right to access the book. Okay, so we have understood it number of times that every partner has a right to access the books of accounts of partnership firm. There are many reasons. What does the account says? What is the valuation of property? What is the value of goodwill? All partners are interested to know about this. So we can have access to books of accounts. This is our right. This right is given to the outgoing partner as well. And the partner who dies, the legal representative or the legal heirs of that partner has given the right as well. So this section 20 talks about your right, you being a partner, your right to access the books of accounts. So first point is every partner, whether active or dormant, has a right to access and inspect the firm's books of accounts. अभी क्या आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं बुक्स को? नो, आप कॉपी भी ले सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज राइट टू कॉपी. पार्टनर कैन आल्सो टेक कॉपीज ऑफ द फॉर्म्स बुक्स. पर्पस ऑफ दिस राइट अभी क्यों दिया गया, हमने इतना पढ़ लिया कि मालूम है कि राइट हमें क्यों दिया गया है. टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट पार्टनर्स आर अवेयर ऑफ द फॉर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशन. वही जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया. यू वांट टू नो वेदर द फॉर्म इज डूइंग बिजनेस ग्रेट, is the firm able to generate the revenues and profits, or it increase losses, what is the value of goodwill. So every financial information or position is given to them via accounts. So the right is being given under section 12D. No misuse. While partners have the right to access the books, they are not allowed to use the information gained for any purpose that is against the firm interest, जिसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना भी कहते हैं. आपके सीए के प्रोफेशन में आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है ये. ठीक है. अभी अगर हम पार्टनर की बात करें, कोई भी प्रोफेशन के पार्टनर की, यदि आपके पास अधिकार दिया गया है तो आपकी ड्यूटी भी है कि आप उस, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स की एक्सेस है, आप उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं. तो आपकी ड्यूटी भी बनती है एट द सेम टाइम कि आपके पास जो भी जानकारी है उससे कुछ जानकारी के दौरान आप अपने बेनिफिट को नहीं ले सकते यूजिंग द फॉर्म्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द फॉर्म्स इंटरेस्ट. क्लियर? एग्जांपल पर लिखते हैं. इफ अ डॉर्मेंट पार्टनर्स वांट टू सेल देयर शेयर टू अ को-पार्टनर, they can appoint an expert to inspect the accounts and their share in the firm, and the co-partners cannot object unless they have reasonable grounds such as protecting trade secrets. समझ आया ये एग्जांपल? ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं आपको मालूम है? एक एग्जांपल दे दो ट्रेड सीक्रेट का कोई, फिर हम समझ जाएंगे. अभी देखो हो क्या रहा है इस एग्जांपल में, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं. डॉर्मेंट पार्टनर अपना शेयर दे रहा है को-पार्टनर को. उसने कोई एक्सपर्ट अपॉइंट किया और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का अधिकार दिया गया है सेक्शन 12 में. अब वो जानना चाहता है कि इसका शेयर कितना है, ये अधिकार भी उसको दिया गया है सेक्शन 12 में. तो को पार्टनर उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये उसका अधिकार है जैसा लॉ कहता है. लेकिन एक लाइन कह दी कि रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करने की बात की गई. व्हाट डज ट्रेड सीक्रेट? Right here exercise is bona fide होना चाहिए. There is a question Laboni asked in the module. There is a sentence that the right to access book must however be exercised bona fide. But it simply means कि good faith में होना चाहिए और against the interest of partnership मेला फाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए. Understand? मेला फाइड इंटेंशन सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से, लेकिन क्या पार्टनरशिप की जानकारी इकट्ठी कर रही है क्योंकि आपको ये अधिकार दिया गया तो आपके पास वो जानकारी है. अपने राइट का मिसयूज करना, अगेंस्ट पार्टनरशिप फॉर्म करना विद मैनिफेस्टेड इंटेंशन है, ये अधिकार आपको नहीं. फिर आपको स्लो हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स द्वारा. ठीक है,
इज इट क्लियर? बोनाफाइड इन गुड फेथ, और अगर हम उसको मेलाफाइड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. ओके, मीनू है सर बिजनेस ऑपरेशन सीक्रेट गुड फेथ बोनाफाइड. यस बेटा, ब्रेक ऑलरेडी मिल गई है, 10 मिनट की कोई ब्रेक नहीं होती. एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ. एक सीक्रेट. ओके गुड. जैसे मान लीजिए कुरकुरे बनाने का या कोका कोला बनाने की कोई पर्टिकुलर रेसिपी या ट्रिक है, या कोई पर्टिकुलर खिलौने बनाने का कोई पर्टिकुलर वो है, हमारे पास कोई मेथड है. ठीक है, तो ये मेथड एक ट्रेड सीक्रेट है. अब इसके बारे में हम को पार्टनर को अपना शेयर नहीं देना चाहते. ठीक है, ऐसे में अदर पार्टनर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. राइट ऑफ लीगल हियर्स एंड ए ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. अब लीगल हियर्स के क्या अधिकार रहते हैं वो पढ़ो एक बार. देखो, इन दी इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक बार रीड करो ये. आजाम कर दे. In the event of death of a partner, his legal heir or legal representative or the duly authorized agent. देखिए तीन चीजें हो सकती हैं, उसका heir, उसका legal representative या उसके द्वारा authorized agent shall have the right to access and inspect and copy any book of the form. ठीक है, अब जब पार्टनर की डेथ ही हो गई है, यदि वो होता तो ये सब अधिकार उसके होते, but because he is not there, then all these rights are available to the heir, legal representative or his authorized agent. Clear? Okay, great. अभी बात आती है म्यूचुअल राइट्स और लायबिलिटीज. इट आउटलाइन, ये कुछ नहीं, एक जनरल लॉ है, इसको सारा पढ़ने की समझने की बेटा जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जो सेक्शन है उनको डीपली समझना है. जनरल एक व्यू दे रहा हूँ. इट आउटलाइंस द म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, including that a partner is not entitled to remuneration for the conduct of business, profit share, equity, losses contributed, equity, interest on capital, and so on. This is just a general slide. हम इसमें जो कवर करेंगे, सेक्शन 13 कवर होता है यहाँ पर, अभी आगे हम पढ़ेंगे. एक सबसे ऊपर हमने एक लाइन लिख दी, मैंने सबसे ऊपर वो इसलिए लिख दी है क्योंकि वो बड़ी जरूरी और अहम लाइन है. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ, फटाफट बताओ बच्चे. What does this line subject to the contract between the partners? And then I have explained these laws. What does it mean? As per the agreement done by partners, yes. What basis and purpose of the contract between the partners? Okay, चलिए एक बार पढ़ते हैं, आपकी बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हो. फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of business. अब क्योंकि पार्टनर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, इज इट सो कि उसको रेमुनेरेशन मिलने का ही अधिकार नहीं? हम तो राइट्स की बात कर रहे हैं ना. और फर्स्ट राइट में हमने ये तो कह दिया कि पार्टनर बिजनेस तो कंडक्ट कर रहे हैं, बट उसको रेमुनेरेशन मिलने का अधिकार नहीं है. क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा कभी कभी होता है? इज दिस कंडीशन वैलिड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस और इन फ्यू सर्कमस्टांसेस? Is it always the case that partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business or not? Agreed in deed, then provided in few circumstances. Okay. Okay, let me check on the portal box as well.
not rare case. It's not about the rare case. It is about when it happens. देखिए बच्चे दो सूरतें होती हैं, ध्यान से सुनिए. There are two situations agreed under circumstances and unless mentioned to provide remuneration in the partnership deed. Correct. Lavoni Saha is correctly answered. Almost लगभग similar answer आ गया. जनरल लॉ. देखिए बच्चे जनरल लॉ क्या कहता है कि आपको पार्टनरशिप में जब आप पार्टनर हैं आपको रेमुनरेशन का अधिकार नहीं है, लेकिन दो सूरतों में. तो अभी ना इसको यहीं से पढ़ते हैं बच्चे, दो स्लाइड्स यहीं से पढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे कंटेंट को बाद में पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से सुनो. जब स्लाइड आएगी आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि स्लाइड क्या कह रही है. Partner is not entitled to receive remuneration, but there are two cases. First is if it is what if paying the remuneration is the general custom, general usage of the partnership. It is a general conduct or practice of business कि हम remuneration देते हैं partners को, तो partnership दिया जाएगा, सॉरी remuneration दिया जाएगा. या दूसरा क्या हो सकता है? First one is if it is usage of normal custom or normal practice of partnership. What else could be? दूसरा क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक है मीनू दी, जैसे आपका अग्रीमेंट है. अगर अग्रीमेंट कहता है कि पार्टनर्स को पार्टनरशिप में रेमुनरेशन दिया जाएगा, तो फिर रेमुनरेशन दिया जाएगा. सेकंड थिंग इज अगर आपकी यूजेज है, आपकी प्रैक्टिस है, आप नॉर्मली ऐसा करते हैं, तो भी रेमुनरेशन दिया जाएगा. तो अब इस फर्स्ट पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं. Subjected to the contrary between the partners, a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. However, अभी हमने खुद ही समझ लिया, हम स्लाइड पे नहीं जा रहे. There are situations where partner can be given remuneration. One is if it is the normal practice of the partnership firm, or another is if it is agreed between the partners. Got the point? Okay, fine, great. This is what active involvement from your side is all the teacher wanted. Great. बेटा यही इसी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ एक सेकंड स्लाइड भी है, सेकंड पार्ट भी वो है, उसका पॉइंट है. उसको भी हम स्लाइड पे नहीं जाते हैं, हम यहीं से समझते हैं. जितना यहाँ से समझेंगे उतना रिकॉल कर पाएंगे इजीली. अभी हम पढ़ेंगे नहीं कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है. एक बार ये पढ़ो और मुझे इसको बताओ उसी बेसिस पे, जैसा फर्स्ट पॉइंट है इस बेसिस पे इसे समझा सकते हो आप. पॉइंट कहता है, एक बार इसको पढ़ लो. Partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the loss sustained by the firm. ये नॉर्मल लॉ, जनरल लॉ कहता है. अब क्या ऐसा हमेशा होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, the general laws says partners are entitled to share profits equally and they have to contribute losses sustained by the firm equally. Is it the case in all the circumstances? The answer is similar to the previous one. No, Lavoni, not every time. Okay, your yes sir answer is for the previous question of two. If profit sharing ratio is not given, no, there is an exception. Meaning, what will be the exception then? Okay. Meenu, what would be the exception then? No, if there is an agreement, then as per that. Okay, mono, correct answer. Or capital invested accordingly. No. It has nothing got to do with capital. No,
I'm not saying that if it has been written in the agreement as per the capital invested, then it would go according to that. But what if there is no agreement to that? What does the general law say? If the partnership deed is not present, many students are asking for break. But already break has been given. And try to conclude the class within 5 to 6 minutes. Okay. Till then, please at least these 2 points. Understand it. जो प्रॉफिट एंड कैपिटल शेयरिंग जो देन देखो देखिए मेरी बात सुनो, हमने इक्वली की बात तो कर दी कि इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, लेकिन क्या इक्वली के अलावा 3:2, 5:2 और any other ratio, is there anything possible like this? There could be a ratio which is not equal. Yes, as per the partnership deed, as per the terms, as per the condition agreed to share the profit and capital, then they could use, I think. Agreed to share profit and capital, then they could. Yes, if they agreed to, then we know. If they agreed to, otherwise equally. The general law will be followed if the profit sharing ratio is not mentioned in their agreement, or if they in the regular course of the business to share profit in a certain ratio. बिल्कुल ठीक है लगोनी. Aminu, I get your point. Good. You've been actively involved in the class since the beginning of session. Great. Okay, so is these 2 points clear to you? अभी third और fourth point पे आते हैं. When a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such as interest shall be payable only out of the profits. इंटरेस्ट को लेकर हम बड़ी बातें करते हैं कि इंटरेस्ट को मेंशन होना चाहिए कि इंटरेस्ट का क्या, तो इंटरेस्ट में भी हम क्या करते हैं, डीड में मेंशन होना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज या तो वो अग्रीड अपॉन है या वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में आते हैं. When a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, interest shall be payable only out of the profits. ये तो हमने जनरल लॉ किया. अदरवाइज जो कंडीशंस होंगी वो एज पर द अग्रीमेंट हो सकती हैं, या तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो सकता है तो या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा. Last one, fourth point is a partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereupon at a rate of 6% per annum. ये जनरल लॉ है 6% पर annum का. क्या हो अगर 6% नहीं और कोई और हो, तो वो जैसा डिसाइड किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं विदाउट मूविंग ऑन टू द कंटेंट ऑफ दिस पॉइंट्स. इसके अंदर लिखा क्या, हमने ये 4 यहाँ से पढ़े, ठीक है. आपका काम है कि यहीं से जब आप एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, just recall the points from this slide only. Okay, interest on capital. Yes, will be payable obviously. अभी आपने क्या करना है, when you are going to understand these points and going through this PPT, just click on these 4 points and just recall the points. What the point says about, उसको याद आ जाएगा, then you move on to the slide, ठीक है. अभी एक बार ये पॉइंट थोड़ा सा फटाफट एक रिवीजन करते हैं इसकी हम 12th की. अच्छा 12 सेक्शन हमने कर लिए थे, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. 12 में क्या क्या आता था. 12A है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन कंडक्ट के लिए रोका नहीं जा सकता. हाँ, यदि आपके पास कोई अग्रीमेंट है जिसमें आपने किसी पार्ट टेक पार्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो वो किया जा सकता है. ऐसे में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता. लेकिन जनरल लॉ यही कहता है कि आप किसी को भी टेक पार्ट करने के लिए मना नहीं कर सकते. ऐसे में लीड पार्टी के पास अकाउंट चेक करने का या डिसोल्यूशन करने का अधिकार होता है. कंसल्ट, हर एक पार्टनर को कंसल्ट किया जाएगा, उसकी ओपिनियन ली जाएगी, लेकिन डिसीजन रूटीन नेचर के मेजॉरिटी से लिए जाएंगे. लेकिन यदि कोई ऐसा डिसीजन है जिसके लिए कंसल्ट करना हो जो रूटीन नेचर में नहीं हो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिसीजन मस्ट बी यूनानिमस.
It means the consent of all the partner is required. सेक्शन 12D बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एक्सेस किया जा सकता है, उसकी कॉपी ली जा सकती है. उसका पर्पस यही है कि आपको फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए और मिसयूज नहीं करना. इट मींस द राइट आल्सो कम्स विद द रिस्पांसिबिलिटी. एंड द सेक्शन 12 देयर एग्जांपल डॉर्मेंट पार्टनर, वो आपका ट्रेड सीक्रेट की बात की गई थी. फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रेड सीक्रेट अदर पार्टनर may restrict to inspect the accounts or to share your right to a co-partner, because that will breach the basic objective of the firm, that is violation of protection of the trade secrets. Then 12 ये सारे अधिकार लीगल ईयर को, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी दिए गए हैं. What rights? To inspect the books of accounts, to make copy, to take extract. म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज की अभी बात हम इतनी ही करेंगे. ये चारों पॉइंट अब आपको पढ़ के आने हैं. एंड व्हाट योर होमवर्क इज ऑल दीज 4 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ऑल दीज 4 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. बच्चे कम प्रिपेयर विद दैट इन द नेक्स्ट सेशन. हमारी क्लास अगली 2 अप्रैल को है, ठीक है. 11 to 1 यही टाइमिंग है हमारी. आपको चारों पॉइंट्स के एग्जांपल के साथ क्लास में आना है, because a very active involvement from all of you, so I am expecting good answers with the help of example. Don't come without example. Although I explain every point, you just need to explain it again too. Going to cover these points in the next class. All. And it is now your homework to come up with the example. What did this particular section says? Great? Clear? Okay. Any query, any question? We will be going to cover that in next session. Ajit sir. Yes, sir. Sir, Megha this side. I'm done with the lecture. Yes, sir, you can leave the class. Just I want to brief the students for 5-10 minutes, so you can leave. Okay, sir. Thank you so much. Yes. Dear students, I have received some queries regarding Niranjana, that whether sections are compulsory or not. So, dear students, first of all, this is the foundation class. So, at the foundation level, sections are not compulsory to write. But if you remember, actually, this is for practice purpose. Law is a theoretical paper. So, presentation of answers matters a lot. So, but at the foundation level, it is not mandatory to write the correct the section number. But for common practice, we prefer that you are being a CA foundation students. Now you will shift to intermediate, then final. So, try to maintain a practice to write the section number. Okay, try to remember कि उसको कोशिश कीजिए कि आप सेक्शन नंबर को याद कीजिए ताकि you can write accordingly. But that for example, you can write the main section. Okay, like associate company ka the section 2 subsection 6, like small company 2 subsection 85. So if you have remembered the section number, then you can quote it. But अगर आपको एग्जाम में there is some confusion कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा या I do not remember the correct section number, then you can simply write your answer like as per the provisions of the Companies Act 2013. Okay, you can write the legal provision. But if you are confused, then just simply ignore the section number. But if you are confident that yes, I remember the section number, then you can write it. But avoid quoting the wrong section number. Okay, first query is resolved. Then second query I have received regarding the webinars. Yes, webinars will be conducted at the foundation level also, but after finishing of the classes. Your classes are going to be finished on 16th April.
So after that, we will schedule definitely, and we will announce the schedule of the webinars very soon. Okay. So do attend the webinars, and we will conduct some sessions for viewers for a success where we will interact with you. Some examination strategies and how to practice. Okay. Some these type of tips we will take in your viewers for a success, and webinars will be topic wise, wherein the expert faculty will be there who will guide you overview of the topic. So please attend your these webinars and VOS for our success, and kindly check your mass mail and VOS mobile apps, because we will announce these, we will make the announcement on these portals. Okay, but right now I cannot confirm you the dates of the webinars because it is under process. We will be releasing the dates of webinars by the first week of April. Just concentrate on the LVC class. Okay, Sanjana, I am saying this again. Right now, the schedule of the webinar is not fixed, but once it's fixed, it will be announced properly on the viewers website. Yes, one more query I have received regarding the legal language. Ma'am, we have to write in our own language, or we can write as per the language of the study material. Dear students, as a students, we cannot expect you that you write in the language of the books. Okay? On the bare act language, you cannot write. We cannot expect this from you. So you can write in your own language, but that language should be legal. What do you mean by legal language? Legal language means you have to write the provisions. Proper provision should be there. If you have remembered the correct section number, you can quote it. Otherwise, you can ignore it. And also, you have to write the name of the act properly. The Companies Act 2013 or the Indian Contract Act 1872. Like this, you have to write the legal. And provision also, it should contain the legal provisions. Like if we are taking the example of small companies 2 subsection 85 of the Companies Act 2013, you have to write the legal provision first. So what are the requirements for the small company? Like paid up share capital 40 lakhs, and what is the paid up capital and turnover. So you have to write that what is the paid up capital and what is the turnover. So you have to write accordingly. Okay, it's not a, it's a small it's a private company. So just simply write down that what is the small company. Yes, there are some different modes. There is a mode of presenting your answer. You have to write your answer in different paragraphs. Like in first paragraph, legal provision is a must. कई बारी क्या होता है, the students are simply writing the facts of the case. Okay, they are just correlating, but there is a stepwise marking in all the papers. So just in the paper 2 business law, just write down the legal provision first. Okay, write down the legal provision first. In the second paragraph, you can briefly explain the facts of the question, and in the third, you can correlate your answer. In the Contract Act, Sudeep has done the practice of the application-oriented questions. Harleen ma'am has also done a lot of questions in your Sales of Goods Act, and now CA Ajay Dogra sir is also doing some questions. And at the end of the session, when the partnership session will come to an end, we will take some more sessions, some more questions. Okay, so this is the strategy of writing the case laws oriented questions. Okay. Yes, Sanjana is writing what are the consequences of Partnership Act. Sanjana, just ask the query to the LVC experts. This time, I'm taking the general queries relating to examinations, relating to publications. Okay? Just hold down. Classes need to explain in English, ma'am. Amrita, yes, we can understand your problem, but the faculty is taking both the language of English as well as Hindi, because we have both types of students. So we have to cater both. How to study and revise law only 45 days? Yes, this is a very good question. Who is asked this question? Just leave that person who has asked. But this is a very relevant question. Dear students, LVC classes are undergoing. Okay, so just do your LVC, attend your LVC class regularly. We recommend
that you attend the live classes. Okay, you can read the study material before the class or after the class as well as. Okay, so just attend the session, read the material carefully 2-3 times. एक बारी पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 2 times 3 times आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं, सेक्शन स्टडी मटेरियल पढ़ना है, एंड उनके अंदर देयर आर सो मेनी इलस्ट्रेशंस. Okay, so complete your study material. Your LVC classes are going to conduct and in 16th of April. तो जब तक आपका स्टडी मटेरियल थॉरली हो जाना चाहिए, कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी मटेरियल बाय 16th of April minimum once. Okay, after that you can revise the study material minimum 2 times and 3 times. And in the previous classes also, I have told you, our LVC classes have told you, faculties have told you that start reading the saransh also. Okay, saransh we have recently introduced. सारांश से आप पढ़िए चैप्टर वाइज. जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एलवीसी में, देन कंप्लीट द चैप्टर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, देन कंप्लीट द सेम चैप्टर फ्रॉम द सारांश. ओके, सारांश में क्या है? क्विक नोट्स वी हैव गिवन, so it will be very beneficial for you. So I am supposing that you have completed the chapter 3, 1, 2, 3 of from the study material, chapter 1, 2, 3 from the saransh also. Okay, so like this you have to follow the strategy. First LVC class, then study material, then saransh. Also, we have recently introduced in March the MTP booklet, model test paper booklet we have released. So please reply me, how many students have referred, have seen the model test paper? Please reply in the chat box. The model test paper is a booklet of 10 last MTP. Dear students, आपको करना क्या है? लॉ के पेपर में ना आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, बट हाउ यू विल present your answer, that you can do by practicing the question. You have to write in the writing practice. आपको writing practice करनी है. practice किसकी करोगे? question of answers, है ना? So many students have written that yes ma'am, I have seen, Amrita has seen, and some more students have written to me that yes, they have referred the model test papers. Okay, just अगर आपने अभी नहीं देखा है, if you have not referred the model test paper, then you can go to the viewers website again. There is a tab. In this you have to tick on the foundation course paper 2. Similarly, paper 1, paper 3, paper 4, we have released the model test paper in all the subjects. Okay, type of questions will be mixed, knowledge and comprehension like direct theoretical, and application oriented like there is a some question we have asked, questions like some case study, and then you have to answer accordingly. Unit 5 and Unit 7 will be taken, Unit 5 will be taken by Sudeep sir, and Unit 6 and Unit 7 there is a new faculty, that is Sulbha Setia, she will take. Okay, particular chapter का weightage के बारे में you can see the website. Chapter 1 का there is a minimal 0 to 5% weightage. Then Indian Contract Act, since it comprises of 9 units, so the maximum weightage assigned is to this chapter, Unit 2. Chapter 2 unit covering 9 units. Then Unit 3 आपका Sales of Goods Act. Unit 4, Chapter 4 your Partnership and Companies Act, that comprises of 15 to 20% weightage. Then LLP is 5 to 10% and negotiable is same 5 to 10%. Okay, Divyani. So that's for today. Just complete the study material simultaneously, revise the saransh also, and practice the questions from the model test booklet. We have released the RTP. If you check the RTP maybe we have given the chapter wise questions. So I am assuming that you have seen the RTP, chapter 1, chapter 2, chapter 3 you have completed from the RTP as well. MTP booklet में से आप देख सकते हो contract act के questions, because it's a mixture of questions. So you can see which questions are covering from chapter 1 Indian Contract Act, Sales of Goods Act, and start doing it because time is very left. This is the CA papers. You have to be very serious. Okay? आपने complete कर लिया, अब उसको जितनी practice आप, there is only one person who can help you, that is only you. Okay, dear students. तो आपको फाउंडेशन में अभी भी जब हमारा जनवरी का रिजल्ट निकला था तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स, बट जस्ट read the study material and practice lot of questions.
This is the simple strategy to follow in the foundation paper 2. Case study questions where we get, Sanjana, case study questions we can get from the RTP, from the suggested answer, from the model test paper. अभी मैंने आपको बताया model test paper की आपकी 10 MTPs covered है और every MTP contains around 20 to 25 questions. So you can analyze then and 10 MTP multiply by 25 questions, that is 250 questions in your booklet. There is a lot of questions to practice, and as well there is a questions at the end of the study material after every chapter, after every unit. Okay, please repeat where to find MTP. MTP book you can find from the VUS knowledge portal. Model test paper के नाम से there is a tab. मैम एमटीपी बुक के आंसर को चेक करने के लिए आंसर रेफरेंस भी है. यस, in the starting you will get the questions and at the end you will get the answers also. अभी मैंने आपको बताया कि you are the only person who can judge you, who can help you. Okay, तो just do not depend on anyone कि yes मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब मैं मैम से पूछूं या मैं अपने जहाँ पे मैं अगर इन केस आई एम टेकिंग सम कोचिंग तो मैं इसके ऊपर, you are the judge on your own. आप एमटीपी के क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद आप अपने आंसर्स को खुद ही चेक कीजिए, तो यू विल गेट एन आइडिया दैट आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है. ओके, एनी मोर क्वेरीज? Ma'am, is it compulsory to read each and every topic from study material because there is very less time? Yes, Divyani, it is necessary to read each and every topic. Okay, because sometimes the questions are based, the examiners prepare the question on single line of the study material. But this I can guarantee that all the questions will be covered, will be based on your study material. But you have to read each and every line of your study material. Okay, Divyani? How can we write MTP exam? MTP के लिए you can make registration in your nearest branch, as well as, and when the MTP series 1 and 2 will be conducted, you can download the MTP at your home also. And after 2 days of questions uploading, you can check your answers from the answers uploaded by the VUS. How to start the assessment? Assessment you can do on your own. Questions are given, answers are given, so you can check on your own कि आपने किस तरह से लिखा है. वी कैन, हम आंसर्स में हमने लीगल प्रोविजन लिखा है नहीं लिखा, बिकॉज इफ योर क्वेश्चन इज ऑफ 4 to 5 मार्क्स तो 2 मार्क्स का आपका लीगल प्रोविजन है, तो आपको लीगल प्रोविजन इज बहुत याद करना है और उसको लिखना भी है. लॉ के पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा. ओके, और आप देखो कि 50% पेपर इज योर नॉलेज ऑप्रीहेंशन, मतलब जिसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसको आपको मेमोराइज करना है, एंड नेक्स्ट 50% और इज योर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन. तो इससे मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको रिमेंबर भी करना है और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टू राइट द आंसर्स. No, there will be no MCQ type in the business law paper and in the accounting paper. RTP is uploaded on the VOS knowledge portal beta, and VOS knowledge portal देखिए उसमें कितने सारे publications है. सारांश is there, model test paper booklet is there, and your RTP is there, your suggested answer is there. Just go to the VOS website and they see कितने सारे questions हैं आपके लिए करने के लिए. Okay, so I'm finishing the class. We will meet on the next Wednesday to complete the unit 2 of the chapter 4, that is Partnership Act. Technical team, please end the session. Thank you, dear students. All the best.